research. Today we will discuss about the interrogative negative and interrogative plus negative of compulsion of future tense, as well as we will discuss about the WH form. Because previous class we have discussed about the compulsion of future tense. In compulsion of future tense we have read रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में ना पड़ेगा या ना पड़ता रहेगा इसे कंपल्सन ऑफ फ्यूचर टेंस का वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मुझे घर जाना पड़ेगा या मुझे घर जाना पड़ता रहेगा, मुझे साइकिल चलाना पड़ेगा या मुझे साइकिल चलाना पड़ता रहेगा, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ेगा या हम लोगों को अंग्रेजी सीखना पड़ता रहेगा. सो इफ यू फाइंड एग्जैक्ट ऑफ सेंटेंस इन हिंदी, देन यू कैन से दैट दिस सेंटेंस इज बिलोंगिंग फ्रॉम कंपल्सन ऑफ फ्यूचर टेंस. Rule of making sentence: subject plus will have to plus V1 plus objects. Once again I am repeating that subject plus will have to plus V1 plus object. I hope that you have read and you have written in your note copy. So according to the rule, let me take one example. If I will take मुझे साइकिल चलाना पड़ेगा, then I can say that I will have to drive cycle, we will have to drive cycle, you will have to drive cycle, he will have to drive cycle, she will have to drive cycle, they will have to drive cycle, Ram will have to drive cycle. Already we have read. So today let's we discuss about the interrogative negative and interrogative plus negative of compulsion of future tense. Already I have written here, you are looking that. So let's we discuss. And first my example is that मुझे पत्र लिखना पड़ेगा. So I am writing here, please. Assertive sentence is that मुझे पत्र लिखना पड़ेगा. That means I will have to write a letter. Very simple. Only you have to careful. I will have to write a letter. For making interrogative, what you will do here? You are looking that will and have to. So don't worry about it, because you know that compulsion of present tense we have used the do or does, and compulsion of past tense we have used the which one did, but here will is available. So making interrogative, what will you do? You have to write first will. You have to write first will. After then you have to repeat all the sentence. That means will I have to write a letter. Will I have to write a letter? This is the interrogative sentence, so that you must put the question mark. For negative sentence, what you will do here? Subject I, so you must write I. After then you have to add the not in will. For example, here will is available, so you can use here not, but in short form we can say that won't. We can use the won't, and other hand we can use willn't. Both are good, but most of the book and newspaper we can find that won't. That's why we can use the won't. So if you find any place willn't, then don't worry about it. So let's try to use the won't. So what will happen here? After the subject, when you make the interrogative sentence, then you can use here won't. After then you have to repeat all the sentence. That means I won't have to write a letter. I am using the very simple English. I hope that you are understanding. I will discuss in Hindi also. So for making interrogative plus negative, what you will do? Here you are looking that won't. Then you have to write first here won't. Won't I have to write a letter. Like that you can make the sentence. And here also interrogative, so that you must put the question mark. So like that you can make the assertive to interrogative to negative to interrogative plus negative. So let's we discuss in Hindi. Then I can say, यदि आपका assertive sentence I will have to write letter मतलब मुझे पत्र लिखना पड़ेगा रहे, तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे कि will को ना बाहर निकाल दीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर ना will है. will एक सहायक क्रिया है. will is a helping verb, we can say auxiliary verb. सो जहां भी सहायक क्रिया रहता है ना, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उसको बाहर निकाल देते हैं. यहाँ विल है तो विल को बाहर निकाल दिया और बाकी बात को छाप दिया, मतलब कॉपी कर दिया. और इंट्रोगेटिव है मतलब क्वेश्चन मार्क. ऑलरेडी यू नो दैट. एंड फॉर मेकिंग नेगेटिव क्या करो, इस सब्जेक्ट के बाद चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना रहे, इस विल में ना नोट जोड़ देना. तो विल में नोट जोड़ देते हैं ना, तो शॉर्ट फॉर्म में वोंट होता है, तो विलिंट होता है. तो जनरली ना वोंट का प्रयोग ज्यादातर होता है, इसलिए मैं भी वोंट का प्रयोग कर रहा हूं. यदि कहीं पर विलिंट मिल जाए तो उसे घबराइएगा नहीं, वो भी क्या है, सही है. तो मैं क्या किया, ये सब्जेक्ट के बाद वोंट डाला, बाकी बात को छाप दिया.
अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना रहे तो वोंट है तो वोंट को क्या कर दीजिए, आप बाहर निकाल दीजिए, बाकी बात को छाप दीजिए, मतलब कॉपी कर दीजिए। और जहां जहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है वहां पर क्या कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए। आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। सो यदि हम हिंदी की बात करें, मतलब हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें, तो क्या होगा कि आई विल हैव टू राइट लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूल में पढ़े ना पढ़ेगा या ना पढ़ता रहेगा। विल आई हैव टू राइट लेटर, क्या मुझे पत्र लिखना पड़ेगा। आई वोंट हैव टू राइट लेटर, मुझे पत्र लिखना नहीं पड़ेगा। वोंट आई हैव टू राइट लेटर, क्या मुझे पत्र लिखना नहीं पड़ेगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, क्या मुझे पत्र लिखना पड़ेगा। मुझे पत्र लिखना नहीं पड़ेगा, क्या मुझे पत्र लिखना नहीं पड़ेगा। सो लाइक दैट वी कैन मेक the interrogative negative and interrogative plus negative of compulsion of future tense. So according to the example, you have to take lots of example. Suppose that I am taking one more example. If I say that मुझे पेड़ लगाना पड़ेगा, then what will happen? I will have to plant tree, will have to plant tree. I won't have to plant tree, won't I have to plant tree. Like that you have to take lots of example. And already I told you that, मैं बार बार आपको बोला हूँ कि आप ना बोलने पर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत सारा, ये तो बहुत सिंपल चीज है आप जानते हैं, लेकिन मेरा एक मोटो है कि आपका मुंह खुले, आपका हेजिटेशन दूर हो, आपका टंग क्लियर हो, ताकि आप जब मैं मैन टू मैन टॉक करवाने का प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई टू मैन टू मैन टॉक, then you can easily speak. So we have finished interrogative negative, interrogative plus negative. So let's start WH form of compulsion of future tense. Let's discuss the WH form of compulsion of future tense. So already you know that how to change the WH form, but only here will is available, so don't worry about it. यहाँ पर will है इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। So पिछला एग्जाम्पल को ही हम लोग लेते हैं। यदि हम बोलते हैं कि तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा, only I am changing the subject. So my example is that क्या है, you will have to write a letter. Very simple example. You will have to write a letter. You will have to write a letter. So how to make the WH form? How to change in WH form? What will you do? Firstly, you have to make the interrogative sentence, and already you now changed. So you have to write first will. सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, will. उसके बाद बाकी बात को क्या कर देना है, छाप देना है ना। कैसे? Will you have to write a letter. हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट इंट्रोगेटिव बनाने के बाद ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले सारा WH फॉर्म को छाप देना है। मैं बताया हूं ना, कंपल्सन ऑफ प्रेजेंट टेंस में, कंपल्सन ऑफ फ्यूचर टेंस में। ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट। सो व्हाट यू डू, बिफोर द विल वी विल राइट व्हाट, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट विल यू have to write. And you know that here what is available, so that what is asking about the object, so we will leave object, and here a letter is object, so we won't write here object. After then, where then what will happen, where will you have to write a letter. And when you take the when, then what will happen, when will you have to write a letter, if I will take why, then what will happen, why will you have to write a letter. Again we can put here question mark, because we are asking the question, that's why. If we take the how, then what will happen, how will you have to write a letter. I hope you are understanding. I am writing better way. Write a letter. Here we will take the who, then what will happen, who will have to
write a letter. So you are looking that here I didn't write here subject. Why? Because who is asking about the subject. So like that we can change WH form of compulsion of future tense. What you do? Once again I am saying that in Hindi कि जब भी आपको WH फॉर्म बनाना रहे क्या करो, सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाओ. बहुत आसान है ये. कौन सा WH फॉर्म बनाना? इंट्रोगेटिव बना लिए. अरे इंट्रोगेटिव बनाना बहुत आसान, अभी सीखे हैं ना. विल को बाहर निकाल दिए तो इंट्रोगेटिव बन गया. अब इंट्रोगेटिव बन गया ना, तो इस इंट्रोगेटिव से पहले सारा WH फॉर्म मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एंड हु को क्या कर देना है, छाप देना है. बट ध्यान रहे व्हाट लीजिएगा तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है, क्योंकि व्हाट किसके बारे में पूछता है, ऑब्जेक्ट के बारे में. वेयर लीजिएगा तो प्लेस, व्हेन रहेगा तो टाइम, व्हाई हाउ लीजिएगा तो रीजन, एंड हु रहेगा तो क्या, सब्जेक्ट. यही कारण है कि यहाँ पर सब में देख रहे हैं यू यू यू, हर एक में है ना यू यू. आप देख रहे हैं यहाँ यू, सब में यू, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सेंटेंस में यू है, लेकिन लास्ट सेंटेंस में यू नहीं है. क्यों? क्योंकि हु इज आस्किंग अबाउट द सब्जेक्ट. दैट्स व्हाई आई डिडंट राइट हियर यू, बिकॉज यू इज द सब्जेक्ट. तो इस तरह से हम लोग क्या WH फॉर्म ऑफ कंपल्सन ऑफ फ्यूचर टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं. यदि हिंदी की बात करें, हिंदी ट्रांसलेशन की, तो क्या होगा, यू विल हैव टू राइट लेटर, तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा. विल यू हैव टू राइट लेटर, क्या तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा. व्हाट विल यू हैव टू राइट, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा. वेयर विल यू हैव टू राइट लेटर, तुम्हें कहां पत्र लिखना पड़ेगा. व्हेन विल यू हैव टू राइट लेटर, तुम्हें कब पत्र लिखना पड़ेगा. व्हाई विल यू हैव टू राइट लेटर, तुम्हें क्यों पत्र लिखना पड़ेगा. हाउ विल यू हैव टू राइट लेटर, तुम्हें कैसे पत्र लिखना पड़ेगा. एंड हु विल हैव टू राइट लेटर, किसे पत्र लिखना पड़ेगा. So according to the example you have to take lots of example. Suppose that I am taking more example. If I say that you will have to drive cycle, then how to change? You will have to drive cycle. Will you have to drive cycle? What will you have to drive? Where will you have to drive cycle? When will you have to drive cycle? Why will you have to drive cycle? How will you have to drive cycle? And who will have to drive cycle? So like that you can change the WH form of compulsion of future tense, but you have to write and practice more and more in speaking. Then you can improve your English and grammar section also. So it is your duty that in homework you have to make 2 interrogative negative and interrogative plus negative as well as 2 WH form. So let's discuss about the 5 sentences. Today our 5 sentences is that on and on, go and see them, suggest a better idea, be prepared for anything, don't just sit there. So I have written here Hindi also. You are looking ऑन एंड ऑन, लगातार या बिना रुके. गो एंड सी देम, जाकर उन्हें देखो. सजेस्ट ए बेटर आइडिया, एक अच्छा सुझाव दीजिए. बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए तैयार रहो. डोंट जस्ट सिट देयर, वहां ऐसे ही मत बैठो. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द मीनिंग ईच एंड एवरी डे. आई एम सेइंग दैट. सो लेट्स वी ट्राई हाउ टू मेक द सेंटेंस. आई विल गिव वेरी सिंपल एग्जांपल. इन प्रेजेंट you are doing very good work because you are doing homework also as well as you are making the sentence whatever I am giving. So on and on, that means लगातार, continuously we can say other English. On and on, you want to learn English, so you must do hard work on and on. You want to speak English, so you practice more and more on and on. Like that you can make sentence. Go and see them, जाकर उन्हें देखो. They are playing in the ground, so go and see them. They are playing the ground मतलब वे लोग मैदान में खेल रहे हैं, इसलिए जाकर उन्हें देखो. यदि हम बोल रहे हैं कि your friend admitted in hospital, so go and see, यहाँ them के जगह go and see him यहाँ कर सकते हो. यदि गर्ल्स है तो क्या डाल देंगे, her, तो go and see her और him कर देंगे वहां. ध्यान रखिएगा, तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए जाकर उन्हें देखो या तो उसे देखो. सजेस्ट ए बेटर आइडिया, एक अच्छा सुझाव दीजिए. एक अच्छा सुझाव दीजिए, कैसे बनाइएगा, बहुत आसान में मैं बताता हूँ. माई इंग्लिश इज वेरी पुअर, सो सजेस्ट ए बेटर आइडिया हाउ टू स्पीक इंग्लिश. या तो बोल सकते हो माई मैथमेटिक्स इज सो पुअर, सो सजेस्ट ए बेटर आइडिया हाउ टू रिमेम्बर फॉर्मूला. अगेन नेक्स्ट, बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए तैयार रहो. देन यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, सो बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग
दैट मीन्स तुम भारत के नागरिक हो, इसलिए किसी भी चीज के लिए हमेशा क्या करो, तैयार रहो। या बोल सकते हैं और तुमको नौकरी करना है इसलिए किसी भी चीज के लिए तैयार रहो, कभी भी इंटरव्यू आ सकता है, कहने का तात्पर्य है तो कि तुमको नौकरी करना है इसलिए किसी भी चीज के लिए तैयार रहो। अभी ज्यादा बड़ा बड़ा सेंटेंस मत बनाइए, छोटा छोटा बनाइए। जैसे हम बोल सकते हैं ना, यू हैव टू डू जॉब, हम लोग पढ़े ना कंपल्सन ऑफ प्रेजेंट है, तुम्हें नौकरी करना है, यू हैव टू डू जॉब, तो वैसे ही ट्रांसलेट कीजिएगा, यू हैव टू डू जॉब सो बी प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए तैयार रहो। अगला है डोंट जस्ट सिट देयर, वहां ऐसे ही मत बैठो, है ना, क्लास इज गोइंग ऑन सो डोंट जस्ट सिट देयर, क्लास चल रही है इसलिए वहां ऐसे ही मत बैठो। या तो बोल सकते हैं योर मदर इज वर्किंग सो डोंट जस्ट सिट देयर, तुम्हारी माँ काम कर रही है इसलिए वहां ऐसे ही मत बैठो। तो इस तरह का सेंटेंस आपको बनाना है। एक छोटा सा एग्जांपल फिर मैं बता दूं ऑन एंड ऑन का, हो सकता है क्लियर ना हो, मैं हिंदी के साथ बता दे रहा हूँ। ऑन ऑन है ना, हम लोगों को अंग्रेजी बोलने सीखना है, इसलिए हम लोगों को क्या लगातार मेहनत करना चाहिए। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, वी हैव टू लर्न इंग्लिश सो दैट वी मस्ट डू हार्ड वर्क ऑन एंड ऑन। Like that, you can make sentence and you have to send as a homework in WhatsApp. Already you know that my WhatsApp and lots of students are sending the homework and making whatever I am giving the sentence. You are making and you are making very good sentence and you are giving me as a homework. So I am very happy and I am requesting you that you have to try to use the different verb because most of the students are using, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं ना, वर्ब बना रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन वर्ब अलग यूज नहीं करें। तो आप अलग यूज कीजिए, तब आपको कभी चेक करने में मजा आएगा और सबसे बड़ी बात है ना, आप सीखिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट की ओर, नए टॉपिक की ओर। तो मैं रोज बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सके। मैं विशेषकर हिंदी मीडियम को ही ध्यान में रखकर ये लेवल मेंटेन किया हूँ, वेरी सिंपल वे में हम लोग सीखते हैं, बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं निम्न लेवल पर हम लोग बात करते हैं। और इसका नोट चाहिए तो इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन रहता है उसका लिंक में जाइएगा, नोट मिल जाएगा। कभी कभी अपलोड नहीं रहता है, उसके लिए घबराना नहीं है क्योंकि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, उसके चलते नहीं हो पाता है, तो मैं नेक्स्ट डे तो कर ही देता हूं। तो इस तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए और दोस्तों के बीच में इसको डिस्कस करते रहिए। मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।